नमस्कार। लॉकडाउन लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ लॉकडाउन लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता। इन द अनलॉक 2 द केसेस आर स्प्रेडिंग एंड वी रिक्वेस्ट all of you to please take care of yourself and your near and dear ones. We are discussing about a concept called DAVIPS, the VIPs. And till now we have discussed D, A and V. D stands for doer or the karta, A stands for action or activity or the karma, and V stands for the vision or the knowledge, which is also called as the jnana. All the three are of three kinds: sattvic, rajasic and tamasic. So today we are taking up the fourth concept, which is called the I or the intellect. उसको हिंदी में बुद्धि भी बोलते हैं. So what is बुद्धि? बुद्धि is, let me explain. बुद्धि is the faculty of discrimination that helps me put my knowledge into action. Is called buddhi. So while I may have the knowledge, if I am not able to put that knowledge into action, that knowledge goes waste or is futile, isn't it? So I am a doctor and a patient comes to me. I have the knowledge, I am a qualified doctor. A patient comes to me. If I am not able to diagnose what has happened to that patient and give medicine accordingly, then the knowledge goes waste, isn't it? So that's buddhi, and that is very, very important. While having knowledge is equally important, but buddhi, intellect is equally important. Is no less important. So it is also of three kinds: sattvic, rajasic and tamasic. So let's look at the first, sattvic buddhi. So what is sattvic buddhi? The shloka goes like this: pravrittincha nivrittincha karya karye bhaya bhaye bandham mokshancha ya vetti buddhi sa parth satviki. सा बुद्धि सात्विकी पार्थ, वो बुद्धि को सात्विक बोला जाता है. पार्थ यानी अर्जुन. हे अर्जुन, दैट बुद्धि, दैट इंटेलेक्ट इज कॉल्ड सात्विक. विच बुद्धि, विच इंटेलेक्ट? प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, द बुद्धि दैट हेल्प्स मी डिसाइड. प्रवृत्ति का मतलब होता है टू परस्यू, व्हाट टू परस्यू. निवृत्ति का मतलब होता है टू विड्रॉ, व्हाट नॉट टू परस्यू. सो व्हाट टू परस्यू, व्हाट नॉट टू परस्यू. कार्य कार्य, द्वंद्व समास यहाँ पे, कार्य और अकार्य. ओके, कार्य इज व्हाट इज राइचियस ड्यूटी, अकार्य इज व्हाट इज अनराइचियस. ओके, सो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी राइटफुली डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन. फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट हेल्प्स मी डिसाइड टू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. देन भया भय, दिस इज ऑल्सो द्वंद्व समास. भय अभय. ओके, व्हेन टू फियर, व्हाट टू फियर, who to fear, when not to fear, what not to fear, who not to fear. Okay, so I'll just explain with an example here. Two friends were drinking in a village booth. I don't need to specify what they were drinking. वहां से मंदिर का पुजारी जाता है, तो एक फ्रेंड बोलता है, आई जस्ट होप कि इसने हमको देखा नहीं. तो दूसरा बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, उसने देख भी लिया तो वो तो देख ही रहा है. तो पहला वाला फ्रेंड बोलता है, मगर वो तो किसी को बताएगा नहीं ना. सो दैट वी से दैट वी हैव टू बी गॉड फियरिंग, बट वी हैव सीन पीपल एंड एट टाइम्स ऑल्सो वी फियर पीपल. सो वी शुड नो हु टू फियर, हु नॉट टू फियर. अनदर एग्जाम्पल दैट कम्स टू माई माइंड इज द स्टोरी ऑफ जहांगीर. जहांगीर के कोर्ट में, की सभा में, एक चोर को लाया जाता है, रंगे हाथों पकड़ के लाया जाता है. और जहांगीर उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने चोरी की है. बोलता नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की. नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की. फिर वो फिर से पूछते हैं, तुमने चोरी की है? तो बोले नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की. ऐसा 2-3 बार पूछते हैं. तो वो बोलते हैं, अच्छा एक काम करिए, कुरान लेके आइए. कुरान लेके आई जाती है और चोर को बोला जाता है कि इस पे हाथ रख के बोलो कि तुमने चोरी नहीं की. बोले इस पे हाथ रख के नहीं बोलूंगा साहब. बोले फिर तुमने चोरी की? बोले नहीं मैंने चोरी नहीं की, लेकिन इस पे हाथ रख के नहीं बोलूंगा. तो जहांगीर ने कहा कि इस चोर को छोड़ दीजिए. जब चोर चला गया, तब उसकी सभा में उसके मंत्री, सब सेनापति, सब ने उसको पूछा, आपने उसे जाने क्यों दिया, उसको तो रंगे हाथों पकड़ा गया था. तो बोले देखिए, उसको पता है कि मैं सम्राट हूं और मैं पूछ रहा हूं चोरी की है, बोलता मैंने नहीं की.
लेकिन जब हमने बोला कुरान पे हाथ रख के बोलो चोरी की है, तब वो नहीं बोल रहा. ही इज फियरिंग गॉड, ही इज नॉट फियरिंग पर्सन. नोइंग दैट आई एम द सम्राट, आई लेट हिम गो. एटलीस्ट उसका भी कॉन्शियस बाकी है. सो व्हाट टू फियर, what not to fear, when to fear, when not to fear, who to fear, who not to fear. Bandham moksham cha ya vetti. Bandha is bondage. Bandham is bondage. So when to be bonded, and moksha is liberation, and when to be liberated. So the faculty of discrimination that helps me decide what to pursue, what not to pursue, what is righteous, what is not righteous, who to fear, who not to fear, what not to fear, and when to be bonded, when to be liberated, is called as the Sattvic Buddhi. So let's look at what is Rajasic Buddhi. Yaya dharmam adharmancha karyancha karyamevacha ayathavat prajanati buddhi sa parth rajasi. Sa buddhi rajasi parth. हे पार्थ, वो बुद्धि राजसिक होती है. कौन सी बुद्धि? यया धर्मम धर्मंच कार्यंच कार्यमेवच. जो धर्म और अधर्म और कार्य और अकार्य अयथावत प्रजानाति के बीच में देयर इज अ कंफ्यूजन जो मुझे पूरी तरीके से नहीं पता. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. सो आई कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू. देयर इज अ कंफ्यूजन दैट प्रिवेल्स. So while the Sattvic Buddhi is 100% sure, dead sure, what is to be done, what is not to be done, what is right, what is wrong, when to pursue, what not to pursue, and when to be bonded, when to be liberated, that's 100% clear. But here there is some confusion that prevails. So what is to be done, what is not to be done. Okay. That is called Rajasic Buddhi. And then comes Tamasic Buddhi. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. सा बुद्धि तामसी पार्थ. That buddhi is called tamasic buddhi पार्थ. Which buddhi? मन्यते तमसावृता. अधर्मं धर्ममिति. That what is dharma is understood as adharma. And what is adharma is understood as dharma. So, and why does that happen? Manyate tamasavruta, because that intellect is shrouded with darkness. Manyate tamasavruta. Tamasa avruta. That is shrouded with darkness. And sarvarthan viparitanscha. So whatever is being looked at, being seen or being practiced is the opposite of what is the rule. Sarvarthan viparitanscha. Buddhissa Partha Tamasi. A teacher goes to a class and she wants to show that alcohol kills. Okay, so she takes 2 glasses, pours whiskey in one and water in one, and then she releases 2 worms in both the glasses. The worm in the water starts swimming, and the worm which is dropped in the glass full of whiskey dies. And she asks the class, what do you understand? And there's this one guy who says that drink whiskey, it will kill all the germs in your stomach. Okay. Sarvarthan viparitanscha buddhissa partha tamasi. And that is what now we have to see. Where do I stand? Whether I'm clear what to pursue, what not to pursue, what to fear, what not to fear, what is righteous, what is not, when to be bonded, when to be liberated, or I have a confusion on all these things, or I do opposite of what is the rule. I need to understand. Okay? And what is my predominant nature. Only then I'll have my action area clearly worked out, and I will be able to work upon them for my own improvement. So now, till now we have seen 4 virtues. In the next we will see P, which is patience or fortitude. In the next episode we will discuss that. Till such time, please take very good care of yourself and your near and dear ones.